Good afternoon, students. Today is 27th February 2021 and we'll be taking second part of increment decrement operator. Let's see one problem on increment operator. We have taken three variables n, j and m. N is initialized as 10, n is initialized as 10, j is initialized as 5 and m is just declared. So ये statement कौन सी हुई? Declaration as well as initialization of three variables. This is the second statement. Now this second statement consists of three variables m, then n and then j. Okay, this equal to is called as an assignment operator. This plus plus is called as increment operator. This minus is called as arithmetic operators, which is used to subtract the value. Now first of all, this statement consists of two operands n, j, and the third one in which value is being assigned. So there are three one on which this statement executes m, n and j. Now this n plus plus is called as postfix increment operator. This we have seen yesterday. N plus plus is called as postfix increment operator. Okay, so this statement is equivalent to the value of n is being subtracted. N plus plus means n is incremented by 1. This statement means n plus plus means n is incremented by 1. But this is postfix increment operator and this statement is not used as a single one. It is used with minus as well as assignment operator. So in this case, this statement n plus plus will work as two part. इसके two parts होंगे. One is first you assign the value of n to the operation which this statement meant to perform, and second one increment n by 1. ये जो n प्लस प्लस है वो दो काम कर रहा है. एक तो n की वैल्यू को असाइन कर रहा है कहां पर, ये इस पूरे पार्ट में, और दूसरा काम क्या कर रहा है, ये n की वैल्यू को बढ़ा रहा है. तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा वो होगा m इज इक्वल टू n माइनस j. क्योंकि ये n प्लस प्लस पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है तो n की वैल्यू जो है पहले असाइन हो जाएगी अपनी प्लेस पे. तो यहाँ पर n आ गया, ये माइनस j क्या हो गया, माइनस जो सब्ट्रैक्शन का है एंड j वेरिएबल हो गया. तो ये जो इंस्ट्रक्शन है n प्लस प्लस ये क्या काम कर रही है, पहले असाइन कर रही है. तो पहले हमने n की वैल्यू को असाइन कर दिया और उसके बाद में ये माइनस j हो गया. ओके, नेक्स्ट टास्क इज it is incremented by 1. What? The value of n is incremented by 1. n is equal to n plus 1. तो ये जो स्टेटमेंट है, this statement is doing two tasks. n is equal to n plus plus minus j semicolon. This statement is doing two tasks. ये जो स्टेटमेंट है ये दो काम कर रही है. पहला काम क्या कर रही है, ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है. पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर होने के कारण ये पहले n की वैल्यू को असाइन करेगी, फिर n की वैल्यू को 1 से बढ़ाएगी. तो n की वैल्यू को पहले से असाइन किया यहाँ पर और फिर n की वैल्यू को 1 से बढ़ाया. जब उसने यहाँ पर n की वैल्यू को असाइन किया तो n इज सब्ट्रैक्टेड बाय j एंड द वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन m वेरिएबल. अब वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, m वेरिएबल में. और दूसरा टास्क क्या किया, इसने n को 1 से बढ़ा दिया, n इज इक्वल टू n प्लस 1. तो पहला ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और दूसरा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. n वैल्यू इज 10, सो 10 यहाँ पर आ जाएगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j, द वैल्यू ऑफ j इज 5, सो 5 विल बी printed over here. So 10 minus 5 will be total 5. तो यहाँ पर कितना वैल्यू आ गया, यहाँ पर 5 आ गया. m के अंदर कितना आंसर आ गया, 5 आ गया. तो जब हम m की वैल्यू को प्रिंट करेंगे यहाँ पर m equal to %d, so what is the value of m that we printed, that is 5. Now the next is n plus 1. n की वैल्यू कितनी हुई, n plus 1. तो 10 है, 10 plus 1 कितनी हो गई, 11 हो गई. तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, n की वैल्यू प्रिंट हो गई 11. सो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ n एज 11. एंड द लास्ट वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j, j इज 5. बट आर वी चेंजिंग द वैल्यू ऑफ j इन दिस स्टेटमेंट? क्या यहाँ पर j की वैल्यू बदल रही है? नहीं, j की वैल्यू बदल नहीं रही है, सिर्फ j माइनस 5. j जो है 5 है, माइनस 5 यहाँ पर सिर्फ यूज हो रहा है, j की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j that will be printed over here? The value of j, that is 5, will be printed over here. So this is the output of this स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट का आउटपुट ये है. ओके, आर यू गेटिंग? Yes, okay, Yes, now ma'am. if I put plus 10 over here as specified in the PPT, what will be the value of ijk? What is the answer which is being expected?
In this case, if I simply add plus 10 over here, what will be the value of J, N and M? J की वैल्यू क्या हो जाएगी? J की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? Are we changing the value of J? No, ma'am. So it will be 5. Then what will be the value of N? 11. 11, because N is just incremented by 1 because of N plus plus. So N will become N plus 1, that is 11. Then what is the value of M? 15. M की वैल्यू क्या होगी? ये हो गई हमारे पास में N की वैल्यू, यहाँ पर 10 असाइन हुई, 10 माइनस कैसे स्टेटमेंट होगी ये? This will be, N value will be 10 minus 5 plus 10. So what is the value which is printed? 10 minus 5 is 5. 5 plus 10 is 15. So our answer will be 15. M value will be 15. Okay. Now you have to take the screenshot and you have to tell me the answer. First of all, you take the screenshot of the statement which I am writing over here. Minus N plus plus. Okay. What will be the output of this code? Take the screenshot quickly. Okay. Second is second code is this. Okay. Take the screenshot of this and give me the answer. ये वाला एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ये है. To take the screenshot of both first question and second question, you have to give me the answer, and then I'll move forward. Okay. Now we'll begin with the conditional operator. Okay. What is a conditional operator? Let's conditional operator. Conditional operator is also called as a ternary operator. क्या बोलते हैं conditional operator को हम? Conditional operator is also called as ternary operator. Okay. A ternary operator pair, that is question mark colon, is available in C to construct conditional expression of the form expression 1 question mark expression 2 colon expression 3. Okay. So this is ternary operator, that is called as conditional operator, and this is the operator which is the replacement of if else statement. The expression 1 is evaluated first. सबसे पहले ये expression 1 evaluate होगा. If it is non-zero, that is true, अगर ये true होगा, then the expression 2 is evaluated. ये वाला 2 evaluate होगा, and that is the value of the conditional expression. तो वो conditional expression की value होगी. Otherwise, if this expression 1 is false, so expression 3 will be evaluated, and that is the result. So either expression 2 or 3 will be evaluated. दोनों एक साथ नहीं होंगे. अगर expression 1 की value true आई, अगर ये right है, then expression 2 will be evaluated. If expression 1 value is false, wrong, then expression 3 will be evaluated. So your answer is either, result is either expression 2 or expression 3. Okay. So it is just if else replacement. If A is greater than B, then you have Z is equal to A, else you have Z is equal to B. Okay. This is comma Z. So if we have the value of A as 10, the value of B as 11, and the Z. Okay, so it is compared. The value of A is compared with value of B. You can input the value of A and B. In that case, your program becomes flexible. Just मैं आपको समझाने के लिए आप taken it 10 and 5. Otherwise, दो statements और extra हो जाती, scanf A, scanf B वगैरह. So just read the value of A and B. That means there is some value in A and B. So first of all, this condition is checked. A is greater than B. Is A greater than B? The question is A greater than B?
So what is the value of A? The value of A is 10. So if 10 is greater than 5, will it return true or false? What is the result of this 10 greater than 5? Is it true or True. false? True. So if it is true, it will move to this statement, Z is equal to A. So what is the value of Z in that case? The value of Z will be, 10. what is the value of Z? Z will be 10. Okay. In case if I make it as 50, so this statement will return true or false, that is 10 greater than 50. True or false? False. The statement is false. So we will switch over to the else part, that is this, else Z is equal to B. Else Z is equal to B. This part will be executed. Else part will be executed. Why else part will be executed? Because this statement is false. If this statement is false, the else part will be executed and the value of Z will be B. So what is the value of Z? It is B. What is the value of B? 50. So what is the value of this will be printed over here. Output में क्या आंसर आएगा? You will get output as Z is equal to, what is the output you will get over here? Z is equal to 50. 50. Okay. So are you getting the answer? If it is this way, what will be the output? 10 is greater than 5. 10 is greater than 5 over here. True, false? Z is equal to A. True. True. Then the value of Z will be, then the value of Z Z is equal will to be, A. Z is equal to A. What is the value of A? 10. What is 10? So the output will be 10. 10 is printed over here. 10. Okay. Okay. Now, replacement of this if else is done using conditional operator. Now, how do I write conditional operator? I write conditional operator as x z is equal to, z के अंदर फाइनल आंसर आ रहा है, या तो a आ रहा है या तो b आ रहा है. पहले हमने एक्सप्रेशन लिखा कंडीशन चेकिंग वाला, a ग्रेटर देन b एंड देन क्वेश्चन मार्क, okay, if it is correct then a, if it is wrong then b. Okay, z is equal to a greater than b, z is equal to a greater than b. a की वैल्यू कितनी है? 10. 10 greater than b, b की वैल्यू कितनी है? 5. 10 is greater than 5. Yes, true, false? Yes, it is true. If it is true, then this expression value will be assigned to z, otherwise this b will be assigned to z. If this expression 1 is evaluated as true, then a value will be assigned to z. If this expression evaluated is false, then b value will be assigned to z. Okay, so this is conditional operator is the replacement of this if else. So I am removing this if else. Okay, so हमारे पास में क्या है? इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, a की मैक्सिमम वैल्यू हुई, कंडीशन ट्रू हुई, a इज ग्रेटर देन b, तो a की वैल्यू कहाँ असाइन हो जाएगी? z में. अगर ये कंडीशन a ग्रेटर देन b फॉल्स हुआ तो b की वैल्यू असाइन हो जाएगी z के अंदर. अब इस केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 10. सो यहाँ पर हमारा चेकिंग क्या होगा? 10 is greater than b, that is 5. 10 is greater than b, 5. तो क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? Is it return true or will it return false? True. It is returning true value. So the value a will be assigned to z. So what is the value of a? That is 10. 10 is the value of a. 10 will be assigned to z. So the output of this will be, what is the output? Z is equal to 10. Okay, if I make it as 50, then here the condition is checked, that is 10 is greater than 50. What is the condition which is checked? 10 is greater than 50. Is it true or false? False. Z is False. equal to 50. So b value will be assigned to z. B value will be 50. So 50 will be assigned to z and the value of z is equal to 50. Okay, this is my conditional operator. इसको क्या बोलते हैं? Conditional operator. Okay, so tomorrow I'll
show you the next practical if it is based on if else and all these things. Now we'll switch to the next concept. Do you want to ask anything? No, ma'am. No, ma'am. Okay. The next operator, that is the special operators, the comma operator. The comma operator can be used to link the related expressions together. A comma linked list of expression is evaluated left to right, and the value of rightmost expression is evaluated of the combined expression. For example, the statement value equal to x equal to 10 comma y equal to 5 comma x plus y. See how it is being written. Value is equal to, value is equal to, तो ये कैसे assign होंगे? The first assigns the value 10 to x, left to right. First it assigns value 10 to x, and then assigns 5 to y, and finally it assigns 15 to value 15 to 5, 10 plus 5, that is 15. So since comma operator has lowest precedence of all the operators, the parentheses are necessary. Comma operator का lower precedence है, इसलिए parentheses जरूरी है. So how this expression will be evaluated? If I put it in a bracket, x की value 10 assign हुई, y की value 5 assign हुई, और x plus y, that is 15 will be assigned. So this is how single statement can also be written. Okay. We have type conversion also. Type conversion means in the last case I told you कि अगर data type mismatch हो रहा है तो हम type conversion कर सकते हैं. Implicit type conversion, and there is something called as explicit type conversion also. So C permits mixing of constants and the variables of different types in an expression. C automatically converts any intermediate value to the proper type so that the expression can be evaluated without losing any significance. This automatic conversion is known as implicit type of conversion. मतलब बिना किसी कुछ प्रॉब्लम किए हुए अगर ए डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप को मैच नहीं करता है तो इम्प्लिसिटली वो उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमने इंटीजर फ्लोट का देखा था. So the rule of type conversion, the lower type is automatically converted to the higher type. जो lower type है वो higher type में automatically convert हो जाता है. Okay. Some computational problems, say for example, let's see, when expressions include real values, then it is important to take necessary precautions to guard against certain computational errors. For example, a is equal to 1.0 divided by 3.0. We have already taken this problem. देखो यहाँ पर a is equal to 1.0. 1.0 means float value हो गया ये, ठीक है, divided by 3.0. ठीक है. अब a का कुछ भी डेटा टाइप हो, पर ये जब डिवीजन होगा इन दोनों का तो इसके अंदर इसका जो डेटा टाइप था उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी. मतलब हमारा आंसर डेसिमल में आ जाएगा यहाँ पर. फिर ये डेसिमल का वैल्यू कहाँ चला जाएगा? a के अंदर. तो a का डेटा टाइप क्या हो जाएगा? फ्लोट में आ जाएगा. अगर ये a डेटा टाइप इंटीजर होगा तो ट्रंकेट कर देगा, अगर a का डेटा टाइप फ्लोट होगा तो फ्लोट में आंसर आ जाएगा. Okay, so b is equal to a into 3.0. So again b, if b is float type, you will get the answer in the float. So there is no guarantee that the value of b will be equal to 1. कोई guarantee नहीं है कि value b की 1 होगी. Another problem is division by 0. 0 के साथ में divide किया. So the third problem is to avoid the overflow and underflow errors. अब क्या problem आया? Suppose यहाँ पर मैंने एक ले लिया, यहाँ पर a, सपोज यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा z is equal to a divided by b. Okay, and suppose at the time of running the program I entered the value of b as 0. Okay, so there is no problem in this statement. A is equal to a, z is equal to b by a, but b should not be equal to 0. That is, mathematics says that b should not be equal to 0, because if there is, the number is in the rational form p by q, so q should not be equal to 0. But if I enter scan the value from the user 0 value, then it will generate an error. So this is the error which is generated at the time of run के time पे जब मैं b की value enter कर रही हूँ. यहाँ constant नहीं डाला, suppose मैंने scanf statement लिखा है यहाँ पे मैं constant नहीं डाल रही हूँ. If I am writing the scanf statement, scanf %d m% a comma b. Okay,
suppose at the time of reading the value from the user, if I enter value of A as 10 and value of B as 5, तो ये it will not generate any error, कोई problem नहीं आएगा. बट मैंने जब स्कैन किया तो A की वैल्यू 10 एंटर की और B की वैल्यू 0 एंटर कर दी, तो क्या होगा, हमारा एरर आ जाएगा. क्यों एरर आएगा? बिकॉज एट द टाइम ऑफ रन वी आर एंटरिंग द इनवैलिड वैल्यू ऑफ B, which should not be equal to 0, because a rational number says that P by Q, rational number P by Q should be in P by Q form only if P is any integer value, but Q should never be equal to 0. So Q अगर 0 होता है तो ये रैशनल नंबर नहीं होता. तो यहाँ पर आपको थर्ड प्रॉब्लम जो अराइज होती है, दैट इज द सेकंड प्रॉब्लम व्हिच अराइजेस इज डिविजन बाय 0. एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज ओवरफ्लो. अगर आपके पास में बहुत बड़ा नंबर डाल दिया आपने, A की वैल्यू सपोज 1,02,300 ऐसे करके कुछ डाल दी, और B की वैल्यू भी बहुत बड़ी डाल दी, जो उसका इसका डेटा साइज था उससे बड़ी डाल दी, तो हमारे पास में ओवरफ्लो आ सकता है जो उसके अंदर स्टोर नहीं होता है. So these are some of the problems which may arise. Okay. Now some of the operator precedence and associativity. We'll see the rules of precedence and associativity. मतलब हमको precedence rules कैसे पता चलेंगे कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा बाद में होगा. Let's see. The precedence rules decides the order in which the different operators are applied, and associativity rules decide the order in which the multiple occurrences of the same level operators are being applied. एक प्रेसिडेंस रूल रहता है, एक एसोसिएटिविटी रहता है. प्रेसिडेंस रूल मतलब कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा ऑपरेटर और कौन सा बाद में होगा. एसोसिएटिविटी मतलब कि उस एक ही एक्सप्रेशन के अंदर अगर वो किसके साथ में एसोसिएट हो रहा है, अगर मल्टीपल अकरेंसेस आ रहे हैं उसका, तो वो पहले क्या एग्जीक्यूट करेगा और बाद में क्या करेगा. ओके, सो टेबल 3.8 on page 7 shows the summary of the C operator. For example, this okay, ये स्टेटमेंट है. अब इस स्टेटमेंट में एक हमारे पास में असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक हमारे पास में प्लस ऑपरेटर है, एक हमारे पास में कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, then we have or, then we have and, then we have not equal to. So many operators are there. So which statement gets executed, which operator gets executed first, and what will be the final value of A. Okay. So we'll see this later on. Okay, operator precedence. This operator precedence I'll show you later on in the next class. Okay, what is the precedence of the operator? So we'll solve this problem. This is a problem up to you. If you have this table, you can just download it from the net or from the book. Operator precedence, and we'll discuss it tomorrow कि कौन सा operator पहले होता है, कौन सा operator बाद में execute होता है. So I am just stopping the